गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एफसीआरए। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है दो प्रोमिनेंट एनजीओज़ का, सीपीआर और डब्ल्यूवीआई का, जो है गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है इस महीने। होम मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि सीपीआर जैसे जो एनजीओज़ हैं ये फॉरेन डोनेशंस को प्रोटेस्ट्स में और लीगल बैटल्स में जो है वो डाइवर्ट कर रहे थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, और मिस यूज़ कर रहे थे फंड्स को इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ख़राब करने के लिए। तो अब हम एफ सी आर के बारे में देखेंगे। होम मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करना इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसका काम है एफ सी आर ए का। एफ सी आर ए के अंदर हर पर्सन और एन जी ओ जो कि फ़ॉरेन डोनेशंस लेना चाहता है उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में के साथ, और जो फंड्स रिसीव किए जाते हैं वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं जिसके लिए रिसीव किए गए हैं। एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। कौन से जो लोग हैं जिनको फॉरेन फंड्स नहीं मिल सकते? कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर जो रिपोर्टर्स होते हैं या फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको नहीं, वो नहीं ले सकते हैं। जजेस या गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके ऑफिस बेयरर्स, कोई भी पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती है। अब रजिस्ट्रेशन देखें अगर हम एफसीआरए में, तो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम्स में वो काम कर रही है एफसीआरए के लिए रजिस्टर कर सकती है। एमएचए जो है वो बैकग्राउंड चेक करता है ऐसे एप्लीकेंट्स के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू, और फिर एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है 90 दिन के अंदर अंदर। एफसीआरए की रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल के लिए वैलिड होती है एक बार जब ग्रांट कर दी जाती है। और तो कैंसिल कैसे होती है? कैंसिल करने के लिए जो है होम मिनिस्ट्री के पास या गवर्नमेंट के पास जो है ये राइट होता है कि कैंसिल कर सकते हैं। और अगर कोई एनजीओ कोई जिस पर्पज़ के लिए रजिस्टर हुआ है अगर वो 2 साल तक वो पर्पज़ नहीं कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है उस फील्ड में, तो जो है उसको रिवोक कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन जो है रिवोक की जा सकती है। मिस यूटिलाइजेशन की जा रही है अगर फॉरेन फंड्स की, तो भी जो है ऑफकोर्स ऑडिट में अगर पता लगता है तो कैंसिल की जा सकती है एनजीओ की एफसीआर रजिस्ट्रेशन। कैंसलेशन ऑर्डर जो है वो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उसके बिना जो एनजीओ की सुननी, मतलब आंसर रिप्लाई सुनना ज़रूरी है। ये नहीं कि डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। तो ऑफ कोर्स एक बार कैंसिल हो जाती है अगर रजिस्ट्रेशन, तो ऑफ कोर्स री रजिस्ट्रेशन जो है 3 साल तक नहीं हो सकती है, और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया भी जा सकता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2015 से लेकर अभी तक लगभग 16,000 एनजीओज़ के जो हैं ऐसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। और होम मिनिस्ट्री की 2012 की रिपोर्ट थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर कि एनजीओ सेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर्स सोवरेन एआई पुश। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है उसको बस बहुत जल्दी कैबिनेट अप्रूवल मिल जाएगा, और इसे लगभग 10,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट होने वाला है। सोवरन एआई का मतलब क्या होता है? सोवरन मतलब कि गवर्नमेंट खुद स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रही है, डिप्लॉय कर रही है एआई टेक्नोलॉजीज़ को, और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, सोसाइटल वेलबींग के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है, सोवरन एआई में जो है इंडिविजुअल प्रोवाइडर से इंडिपेंडेंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसका प्रॉपरली, कोई डेटा प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी के ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट के ऊपर, कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट नहीं की जा सकती, और सेल्फ डिटरमिनेंट सिलेक्शन जो होती है मॉडल्स की वो गवर्नमेंट खुद करती है। ठीक है, तो सोवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक ऑटोनॉमस और सेल्फ कंटेंड एआई इकोसिस्टम बनाना चाहता है, और इसमें जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कंट्रीज़ लाइक इंडिया, स्वीडन, जापान, फ्रांस में ये देखने को मिल रहा है। सोवरेन एआई और इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो हमने ऑफ कोर्स एआई तो छोड़ो, हमने बाकी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करते गवर्नेंस सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से दिए हैं, जैसे कि यूपीआई, फिर आधार, मतलब बेसिकली हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इवन दूसरी कंट्रीज़ को भी हम हेल्प कर रहे हैं इसमें डेवलप करने में। तो रियल लाइफ में हम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों में सोवरेन एआई का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इंडिया का जो एआई मिशन है ये कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ कंट्री में
एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो एआई की एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर्स में कैसे प्रमोट की जाएंगी, ये इसका मिशन है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि कंप्यूटेशनल कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी कंट्री में, और बोथ विद इन गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इसको परसू किया जाएगा। तो सी डैक को ये जिम्मेदारी दी है, जैसे कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जिम्मेदारी है उसके पास, कि वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ जो है वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें कि कैसे जो है एआई को भी जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ही तौर पर जो है वो आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इवन डेटा सेट्स भी बनाए जाएँ ताकि इंडियन स्टार्टअप्स को वो डेटा सेट्स शेयर किए जा सकें, नॉन पर्सनल और एनोनिमाइज्ड डेटा सेट्स, जिसके बेसिस पर जो है मॉडर्नाइज्ड गवर्नेंस जो है वो लोगों को दी जा सके। ठीक है, और इकोनॉमिक वेलबींग भी जो है जो है हमारे बिजनेस इंडस्ट्री की उसको देखा जा सके। गवर्नमेंट शायद ये भी प्लान कर रही है कि बिग टेक कंपनीज़ का एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा भी यूज़ किया जाए और वो इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें शेयर करने को कहा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्म कर रही हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के आउटलुक को, कि कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस और यूज़ किया जा सकता है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? व्हाट्सएप। ठीक है, उसमें सबसे पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉपुलर लेवल पर देखने को मिली, जिसमें क्या होता है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई और उसमें टैम्परिंग ना कर सके, तो क्या किया जाता है कि एक यूज़र जो सेंडर है, वहाँ जब वो मैसेज सेंड कर रहा है तो वो डेटा जो है उसको सीक्रेट कोड से जो है वो लॉक कर दिया जाता है। जब जो रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वही सीक्रेट कोड से उस डेटा को अनलॉक किया जाता है। तो मतलब अगर उसमें बीच में कोई भी टैम्परिंग करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोड लॉक्ड है। ठीक है, बोर्ड मैसेज। तो उसको हम कहते हैं इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एक जगह से दूसरी जगह तक लॉक करके आपने चाबी से जो है जो है समझ लो बॉक्स को भेजा है, जिसके पास आपने भेजा है सिर्फ वही उसको जो है वो खोल कर देख सकता है। ठीक है, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है उसमें मैसेजेस जो है उनको इंक्रिप्ट किया जाता है, और तो एक तरह से ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैसेजिंग। लेकिन इसमें भी इश्यूज़ हैं ज़रूर, क्योंकि कुछ ऐसे मेलवेयर भी बनाए गए हैं जो कि आपके मैसेजेस को स्नूप कर सकते हैं। कैसे? अगर वो आपके डिवाइस को ही इन्फिल्ट्रेट कर लें। ठीक है, क्योंकि एंड यूज़र तो आप हो, आपके पास मैसेज वो आ रहा है, जैसे ही आपका डिवाइस उसको अनलॉक करेगा तो जो ये मेलवेयर्स हैं जो आपके डिवाइस में प्रेजेंट हैं वो उसको जो है वो देख सकेंगे। ठीक है, तो एक तरह से बैकडोर एक्सेप्शन भी क्रिएट की जा सकती है, जिससे कि जो है वो उन इनक्रिप्टेड मैसेजेस को देखा जा सके। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया है, जिसमें कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑफिसर्स को आंध्र प्रदेश के समझाया है। तो इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो जिसमें कि डिजिटाइज़ किया जा रहा है डेटा को। जो भी इलेक्शन कमीशन सीज़ करेगा, आइटम्स इंटरसेप्ट करेगा, कोई भी कैश, लिकर, ड्रग्स, प्रेशियस मेटल, फ्रीबीज, जो कि इलेक्शन के थ्रू जो है इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफर करती हैं, उनको जो है उस सारे डेटा को डिजिटाइज़ किया जाएगा। क्यूआर बेस्ड रिसीट्स उनकी बनाई जाएंगी, ताकि जो है सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो सके, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सके अमंग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेम्बा इफेक्ट। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेम्बा इफेक्ट जो है वो साइंटिस्ट को कैप्टिवेट कर रहा है अभी तक, और एक तरह से ये फिजिकल मैकेनिज़म्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। तो पेम्बा मैकेनिज़्म क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि हॉट वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से फ्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर इन सिमिलर कंडीशंस। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके इफेक्ट्स के रीज़न ये दिया जा रहा है कि जो माइक्रो बबल्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में जब हम जो है बॉइलिंग करते हैं उसकी। तो कन्वेक्शन प्रमोट होती है, हीट बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है जब जब वाटर जब कूल होना शुरू होता है। और जब इवेपोरेशन में भी ये देखा गया है कि जो वार्मर वाटर है वो इवेपोरेट होता है जब तेज़ी से, तो अपनी हीट अपने साथ ले जाता है।
तो कन्वेक्शन और ये एक्सेलरेटेड हीट ट्रांसफ़र की वजह से जो है वार्म वाटर बहुत तेज़ी से जो है वो ठंडा होता है और वो फ्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर जो कि ज़्यादा डेंस भी है, ठीक है। तो एक और भी फैक्टर ये है कि जो कोल्ड वाटर है, आपका नॉर्मल वाटर है, उसमें फ्रॉस्ट होती है। फ्रॉस्ट जो है वो एक इंसुलेटर है और वो लॉस ऑफ हीट को स्लो कर देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो गर्म पानी है वो बहुत तेज़ी से फ्रीज़ होता है सिमिलर कंडीशंस में, अगर हम उसको हम नॉर्मल ठंडे पानी के साथ रखें तो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनसेट 3DS। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने की टेस्ट जितने भी करने थे इनसेट 3DS पे वो कर लिए हैं और उसको अब कुछ टाइम में बस लॉन्च करने वाले हैं। तो इसरो और IMD का जो है ये जॉइंट एफर्ट है, ये इनसेट 3DS क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स हैं ये, जिनको GSLV F14 के साथ जो है वो भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। GSLV F14 जो है मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट है जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज़ कर रहा है। इसमें क्रायोजेनिक लिक्विड प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है ऑल 3 स्टेजेस में। और इनसेट 3DR क्या है? बेसिकली एडवांस्ड मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं इंडिया की, जो कि इमेजिंग सिस्टम पर काम कर रही हैं, एटमॉस्फेरिक साउंडर पर काम कर रही है। बेसिकली नाइट टाइम पिक्चर्स जो है लो क्लाउड्स की और फॉग में जो है ये दे पाएंगी इन मिडल इंफ्रारेड बैंड में। सी सरफेस टेम्परेचर को बेटर एक्यूरेसी के साथ जो है एस्टिमेट कर पाएंगी। विजिबल और थर्मल इंफ्रारेड बैंड्स में हाई स्पेशल रेजोल्यूशन इमेजेस भी क्रिएट कर सकेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब से ये स्कीम अनाउंस की है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अभी तक सिर्फ 7 स्टार्टअप्स जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल पाया है एज़ कम्पेयर टू जितना टारगेट रखा गया था कि हम 5 साल में 100 स्टार्टअप्स को जो है हेल्प करेंगे। तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री को। तो इंडिजिनस सेमीकंडक्टर कंटेंट जो है हम बनाना चाहते हैं। मिशन 2022 से शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए। और इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं, जिसमें कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंडिया चिप सेंटर बनाकर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है। फिर PLI का प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव सपोर्ट भी है, मतलब लगभग 50% तक का एलिजिबल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट जो है सपोर्ट दिया जा रहा है, मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए पर एप्लीकेशन। ऐसे ही डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, मतलब कि जो नेट सेल्स टर्नओवर, मतलब जैसे जो PLI स्कीम में बेनिफिट होता है कि 6 से 4% क्या नेट सेल्स का टर्नओवर क्या अगले 5 साल का आपको जो है मैक्सिमम 30 करोड़ तक की जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो 3 तरह के कंपोनेंट से इस स्कीम को सपोर्ट किया जा रहा है। नोडल एजेंसी ऑफ कोर्स सीडेक है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is FCRA. This topic is important for your governance section. So Foreign Contribution Regulation Act FCRA registration of 2 prominent NGOs CPR and WVI have been cancelled by the central government recently. So it was alleged that CPR was diverting foreign donations to fund protests and legal battles against development projects, and these funds were misused to affect India's economic interests. So what is FCRA? FCRA is monitored by the Home Ministry, and the law aims to regulate foreign donations to individuals and organizations so that they can function and with the values of a sovereign democratic republic. So FCRA requires every person or NGO who wants to receive foreign donations to be registered under this act, to open a bank account for the receipt of foreign funds in State Bank of India, Delhi, and to utilize those funds only for the purpose for which they have received it. Okay, they also have to file annual returns, and they should not transfer the funds to another NGO. So who all are banned from receiving foreign funds? Candidates who are fighting elections, journalists of newspapers or media broadcast companies, judges and government servants, members of legislatures and political parties or their office bearers, and organizations who are of political nature. So they cannot receive foreign funding.
So how these registration under FCRA occurs? So individuals or organizations with specific cultural, economic, educational, religious or social programs, they are eligible for FCRA registration. Following their application, the Home Ministry conducts background check on the applicant through Intelligence Bureau, and then they process the application accordingly. Generally, it has to be approved or denied within 90 days, and the FCRA, once approved, is valid for 5 years. Then how this cancellation occurs? So government reserves the right to revoke any NGO's FCRA registration if it discovers violation of the act. So registration can be revoked if the NGO has not engaged in that reasonable activity in the chosen field for 2 consecutive years, and if the central government thinks that it is necessary in the public interest to revoke the certificate, and if an audit uncovers irregularity in NGO's finances, such as misutilization of foreign funds. So no cancellation order can be issued unless that person or NGO has been given a due chance or due opportunity to be heard. And once an NGO's registration is cancelled, it is ineligible for re-registration for 3 years. All government orders can be challenged in the High Court. So since 2015, about 16,000 NGOs registration has been cancelled, FCRA registration. So as per a report in 2012 during the UPA government, the Home Ministry said that NGO sector is vulnerable to the risks of money laundering and terrorist financing. So the next topic is Center's Sovereign AI push. This topic is important for your science and tech section and also your governance section. So Union Minister for State and Union Minister of State for Electronics and IT has said that the ambitious AI mission may soon be given cabinet approval, and it could have an outlay of more than 10,000 crore rupees. So what is sovereign AI? So basically, it when the government wants to develop its own AI and build computational capacity or offer compute as a service to India's startups, it is basically sovereign AI. So under sovereign AI, strategic development and deployment of AI technologies is done by national governments. So the aim is to protect national security, economic competitiveness, and societal well-being. The sovereign AI involves independence from individual providers, consideration of legal regulatory framework, compliance with data protection and transparency obligations, avoidance of potential copyright infringements, and self-determined selection of the models. Okay, so the idea is to have an autonomous and self-contained AI ecosystem. So that's why countries like India, Sweden, France, and Japan are contemplating using their own data to develop their own AI. So India has pitched itself as a country which has already used technologies to develop and deliver governance solutions. Like we have this UPI Aadhaar payment system. So we have already developed this digital public infrastructure, which we are rather sharing with other countries also through the G20, okay, and even to the global South countries. Now India wants to take the same DPI approach with AI also, and focus on real life issues in healthcare, agriculture, governance, language translation, etc. So what would be the AI mission of India? The aim would be to have or to establish sufficient AI computing power in the country, and under this mission AI applications in agriculture, healthcare and education related sectors will be promoted. So the government is planning to build computational capacity and offer compute as a service to India startups also, and this capacity building will be done both within the government, by the government, and through a public private partnership model also. So under the public private partnership model, the CDAC has been given the responsibility as part of the national supercomputing mission to offer various incentives for private companies to set up computing centers in the country. Okay, government is also planning to build data sets and making them available to Indian startups. This platform will consist of non-personal and anonymized data sets, and the government would modernize data collection of its own and improve data governance, and rather the wholesome governance. Center is also considering issuing a directive to the big tech companies so that they can share anonymized personal data in their possession with the Indian government or through to the India datasets platform. Okay. So the next topic is end-to-end encryption. This topic is again important for your science and tech section. So end-to-end encryption protects the information in such a way that it has transformed human rights organizations, law enforcement agencies, and technology companies' outlook towards
access and use of information. So end-to-end encryption is basically a way of protecting data from unauthorized access or tampering. So just take the example of WhatsApp. So if I send you a message, the moment I am sending the message, it will be encrypted through a secret code, and uh, until it reaches you, that message would remain encrypted. And once it is reached by reached to when it is reached to your device, it would be decrypted, and you would be able to see that message. In between me and you, there would be no entity who would be able to access that message, because it has been locked by a secret code. So this key is used to encrypt, and the same key is used to encrypt and decrypt the data. So in end-to-end encryption, only the person on each end, that is the sender and the receiver, they can read the exchanged messages, and not anyone else, because the messages get encrypted on the device before being sent, and only are they get decrypted once they reach the intended recipient. But there are still issues with end-to-end encryption, because some potential malware can also snoop on your messages by infiltrating your device, because ultimately the message would be decrypted on your device, and if your device is also having the malware, then it would be able to see that message. Okay, similarly, a backdoor can be installed on your device, which would allow the company to have this encryption resolved and access the messages. Okay, so the next topic is election seizure management system. This topic is important for your governance section. So recently, Election Commission of India has conducted a training program uh, to introduce the election seizure management system for the officers of Andhra Pradesh. So election seizure management system is a dedicated technology platform which is designed and developed to digitize data for intercepted or seized items. So it would also allow banks to generate QR code based receipts for case movement. So it is basically when the election commission seizes some, let's say, cash, liquor, drugs, precious metal, freebies, etc., they would be able to register them, to register those items and digitize that data, so that there would be seamless coordination and intelligence sharing amongst the enforcement agencies with respect to that. Okay, so the platform would be such that all central and state enforcement agencies would be onboarded on it. Okay, so the next topic is Pemba effect. This topic is important for your science and tech section. So Pemba effect still continues to captivate scientists with its complex interplay of physical mechanisms. So Pemba effect basically is that hot water freezes faster than cold water in similar conditions. Okay, so what is the reason behind it? You may have seen in videos also that once that in very cold weather, the people, they throw hot water and then it freezes into snow, or it freezes into ice very fast as compared to normal water. Why it happens? Because the micro bubbles, they remain suspended in hot water, and which promotes convection, and this heat transfer gets faster as the water cools. And during evaporation also, the warm water evaporates more, so it also takes away some heat with it, and both convection and accelerated heat transfer is enhanced in warm water because such water is less dense. And there is also one more factor, that in cold water there is already presence of frost, which is an insulator, and it could also slow down the loss of heat, which is why the hot water is more susceptible to freezing as compared to cold water. So the next topic is INSET 3DS. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has completed all key tests on INSET 3DS satellite before its final launch. So INSET 3DS is a collaborated effort between ISRO and IMD, Indian Meteorological Organization, which will be a part of this. INSET 3D is a part of series of climate observatory satellites, which will be launched by using the geosynchronous launch vehicle F-14. So GSLV F-14 is more advanced rocket which will be utilizing liquid propellant. It has the higher capacity and it uses cryogenic liquid propellants in all three stages. So what is INSET 3DR? INSET 3DR is basically the key advanced meteorological satellite of India, which is which will be providing nighttime pictures of low clouds and fog, and it
It has it will be help in estimation of sea surface temperature with better accuracy, and it will provide high spatial resolution in visible and thermal infrared bands. Okay. So the next topic is design linked incentive scheme. This topic is important for your economy section. So since announcement, the design linked incentive scheme of the central government has approved only 7 startups, which is considerably low, because the actual target was to have at least 100 such startups being supported over a period of 5 years. So, the design linked incentive scheme offers financial incentives as well as design infrastructure support to semiconductor designing companies. The aim is to achieve significant indigenization in semiconductor content. The duration of this mission was initially 3 years, starting from 1st January 2022, but of course, the mission would be extended now. Okay, so the scheme has 3 components. First is, of course, the design support, design infrastructure support, through which CDAC would be setting. CDAC is Center for Development of Advanced Computing. CDAC will be setting up the India Chip Center to host the state of the art design infrastructure. Then this product design linked incentive component is providing reimbursement of up to 50% of the eligible expenditure, subject to a ceiling of 15 crore rupees per application. Then there is a deployment linked incentive also, like the PLI scheme, under which 6% to 4% of net sales turnover incentive is given over 5 years, subject to a ceiling of 30 crore rupees per application. And who is implementing it? The nodal agency is CDAC itself. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.